it is not only the sand and the soil particles, fine soil particles are there, but there are many other components in the soil, especially the earthworms and the microorganisms are present in the soil. The microorganisms are there which we cannot see, which we cannot see through our eyes, but they are always present in the soil. And the earthworm, as you all know, it's also called as a farmer's friend, because it makes the the soil smooth as it goes deep into, and it keeps the soil airy. So that is why it is called as the farmer's friend. And secondly, there are many, then there's still a slit is there, that means that soil, some minerals are there, then sand is there, dust is there, the organic matters like the rotten leaves, that means the dried leaves are there, dung is there, cow dung is there. So all those things acts as a manure, which is a organic manure, which is a natural manure that is present in the soil also. Which organisms are found in the soil? Microorganisms and earthworms are found in the soil. Which different components of the soil can be seen separately? Different components like stones, coarse sand, coarse sand, fine sand and silt and soil are seen separately. मतलब कि मोटा sand होता है, थोड़ा fine sand powder is also there, then small stones are there, then silt is there, and soil can be seen separately in these are the components of the soil. The meaning of components of soil is how the soil is made. उसके अंदर ऐसा soil के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे वो soil बनता है. तो वो जो चीज़ें जो soil के अंदर होती हैं वो ये sand होता है, छोटे stones होते हैं, fine sand होती है, फिर उसके अंदर silt होती है, और fine soil का जो fine powder of the soil we can say that is present. Now there are two types of components that are present in the soil. One is the biotic, another is the abiotic components. Now biotic components includes all the means जो कि living organisms में से हमको मिलते हैं, that those are the biotic components, and abiotic is totally non-living things like stone है, mud है, silt है, वो सब abiotic में आता है. So leaves, feathers, part of living organisms are seen. These are living components. Sand, stone, clay, etc. are non-living components. So all these non-living components come under abiotic components, and the leaves, feathers of the birds, then parts of the living organisms, all these are the living components, which is called as the biotic components. So there are two type of components present in the nature. One is the biotic, another is the abiotic. Biotic means obtained from the living organisms, and abiotic, which is totally non-living components. So in the soil also, biotic components are microorganisms, excreta of the waste or the wastes of the animal. जो एनिमल वेस्ट होता है, जिसको कि हम डंग बोलते हैं, या काव डंग है, या जो एनिमल्स का वेस्ट होता है, दैट इज बायोटिक. देन लीव्स, रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स फेदर्स, दीज आर ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स. ए बायोटिक में सैंड, मड, silt and stone. Now it's true, marble, coal, graphite, diamond, gypsum, calcium, petroleum, that is diesel, petrol, kerosene, gas, etc. are obtained from the soil. Is any such things obtained nearby you? हमारे आसपास ऐसी जो है, हमारे आसपास तो नहीं, लेकिन गुजरात में हाँ बहुत सारी जगह पर पेट्रोलियम जो है वो मिलता है हमको. बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर के ऑयल वेल्स है, जहाँ से हमको जो है कच्चा तेल, यानी कि जिसमें से कि हम डीजल या पेट्रोल, केरोसिन और ये सब एक्सट्रैक्ट करते हैं, वैसा हमको मिलता है. मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, आयरन आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल. फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेन्ड? सो जैसे डायमंड माइंस होती हैं, जैसे पत्थर की खान होती है, वैसे ही सोने की, चांदी की, ये सब की भी खानें होती हैं. और मर्करी, कॉपर, आयरन, ये सब भी हमको मिट्टी में से ही मिलता है. दीज आर ऑल द मेटल्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल ओनली. सो फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेन्ड, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 76 इज द ऑब्जर्वेशन. Now as I told you, there are the places, कुछ प्लेसेस होती हैं जहाँ पर मिट्टी बहुत अच्छे से, जैसे रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, उसके आसपास की जो मिट्टी होती है, स्पेशल द रिवर्स के आसपास की मिट्टी जो होती है वो काफ़ी फर्टाइल मानी जाती है, वो बहुत अच्छी होती है. फर्टाइल मीन्स वेयर द प्रोडक्शन ऑफ द और द फार्मिंग कैन बी डन इन अ प्रॉपर वे, बिकॉज द लैंड इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स. So circle,
the correct information. Here varieties of soil are there. As I told you that the soil has been divided into two types, or the classified into two types on the basis of the components that they have, and the second is on the basis of the color they have. So on the basis of the components they have is your sandy soil, clay soil, and alluvial soil. There are these are the three different types of soil. And on the color is the red color, black color, and the brown color soil is there. Now all these soil have their own specialities. So all different types of special types of crop grow in those types. जैसे कि ब्लैक सॉइल है उसमें कॉटन बहुत अच्छे से होता है. और हमारा एरिया जो है इंक्लूडिंग द सौराष्ट्र एंड द गुजरात सुरेंद्रनगर एरिया, वेयर यू हैव अ नाइस कॉटन क्रॉप ग्रोइंग अराउंड द सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट. वी हैव द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन ग्रोइंग अराउंड हियर. देन कैस्टर सीड्स है वह बहुत अच्छे होते हैं. तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे इस एरिया में ब्लैक सॉइल के अंदर बहुत अच्छे से होते हैं. Now the components that we can see here, what you have to do is you have to see samples from the different types of soil in your area. हमारे एरिया में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल अवेलेबल है दैट वी हैव टू सी. सबसे पहले रिवर और कैनाल के पास जो होता है, जैसे हमारे यहाँ नर्मदा कैनाल है तो उसके आसपास के सॉइल कैसे है, कलर ऑफ द सॉइल रेड, ब्राउन और ब्लैक, सो इट इज रेड. देन लेक के पास कैसे कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है. फील्ड में मतलब जो खेत होते हैं जहाँ पर खेती की जाते हैं वह ब्राउन और ब्लैक दोनों कलर के सॉइल्स होते हैं. फिर स्लोपी एरिया जो होते हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है या ढलान वाले एरिया में कैसी होती है, ब्राउन कलर की सॉइल होती है. और गार्डन्स में भी ब्राउन कलर का ही, नॉर्मली जो हमारे घर के अंदर गार्डन्स होते हैं वहाँ कैसा सॉइल होता है, ब्राउन कलर का ही सॉइल होता है. देन अमाउंट ऑफ पेबल्स मतलब कि छोटे छोटे बड़े जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे से मिट्टी के अंदर, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, रिवर और कैनल में होते हैं. मीडियम अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन द सॉइल ऑफ लेक. देन इन द फील्ड दे आर वेरी वेरी लेस नंबर ऑफ पेबल्स, यानी कि पत्थर जो होते हैं खेत में जो होते हैं सबसे ज़्यादा कम होते हैं, स्लोपी एरिया में तो बहुत ही कम होते हैं. और जो हम गार्डन्स बनाते हैं उसमें भी कम ही होते हैं, अगर होते हैं तब भी हम उनको रिमूव कर देते हैं. देन अमाउंट ऑफ सैंड. Near rivers and canals, the soil that we see has a high amount of sand. नदी के पास हमेशा रेतीला इलाका ज़्यादा होता है, इसलिए जो है रेती ज़्यादा होती है. फिर लेक के पास वाले में जो होती है वो रेती कम होती है. वैसे नदी के आसपास जो मिट्टी होती है उसके आसपास जो शुरुआत में नदी के पास थोड़ी सी जो होती है वहाँ पर रेती होती है, लेकिन उसके बाद की मिट्टी बहुत ही फर्टाइल होती है. वैसे ही लेक के पास जो होती है जो रेती कम होती है, उसके बाद फील्ड में तो रेती बहुत ही कम होती है. वैसे ही स्लोपी एरिया में भी जो होती है सैंड बहुत कम होता है, और गार्डन में भी बहुत ही कम अमाउंट में सैंड होता है. अमाउंट ऑफ क्ले, इट इज़ लो नियर द रिवर्स और कैनल्स, क्योंकि रेती ज़्यादा होती है इसलिए वहाँ पर क्ले जो होता है वो चिकनी मिट्टी जो होती है वहाँ पर कम होती है. फिर लेक के आसपास जो होती है वो मीडियम अमाउंट होती है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं. फील्ड में बहुत ही कम होती है, स्लोपी एरिया में भी कम होती है, और गार्डन में भी जो चिकनी मिट्टी होती है उसका गार्डन नॉर्मली हम लोग उसको मिट्टी को यूज़ नहीं करते हैं. देन अमाउंट ऑफ लोम, it is very low in the river or canal, high near the lake, medium near the fields, and then medium near the slopy area also, and medium in the garden also. Then amount of the organic matter, which is very low near the rivers, which is high near the lakes, then medium and medium in the field. जो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है फील्ड में इसलिए मीडियम होता है क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है वो उसमें डाला ही नहीं जाता है. आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक या केमिकल वाला फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करते हैं. ऑर्गेनिक मिलना मुश्किल भी होता है जो खेत होते हैं वहाँ पर, क्योंकि ना तो वहाँ पे पेड़ पत्तियाँ उतनी, तो पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे. जो उगाया हुआ होता है वही पेड़ होता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई पेड़ पौधे नहीं होते कि पत्तियाँ इकट्ठी हो या ऐसा कुछ नहीं होता है. इसलिए ऑर्गेनिक जो मिनरल होता है मैटर होता है वहाँ पर कम होता है. और गार्डन में भी हमारे जो गार्डन होते हैं उसमें बिल्कुल नहीं होता है. वैसे ही स्लोपी एरिया में तो कोई चीज़ टिक ही नहीं सकती, स्लोप में सब नीचे आ जाता है. On the basis of these qualities that we have seen from all these, the color of the soil, amount of pebbles, amount of sand, amount of clay, amount of flow, and amount of organic matter. So on all these basis of all these points, the type of soil, the first which has near the river or canal we get the sandy soil. Then in the lake, near the lake we get the loamy soil. Then in the fields is the clay soil, and in the slopy area it's also clay soil, and in the garden also it is
a क्लेई सॉइल। तो कैसा सॉइल मिलता है हमको? क्लेई सॉइल जो होता है वो हमको मिलता है। और लोमी और सैंडी सॉइल इज नियर, सैंडी इज नियर द रिवर एंड लोमी इज नियर द lake. So these type of soils, this way we can distinguish between all these different types of soil. Now we move on to page number 77, which reads as based on the color of the soil and based on the component of the soil. Based on the components of soil is types of soil on the basis of the color. Generally, the soil can be classified on the basis of its color. Now, how can we classify the soil on the basis of color? Soil which is red in color is known as the red soil. If it is black in color, it is called as black soil. And if it is brown in color, it is called as the brown soil. So on the basis of color, how we distinguish it? As red soil, black soil and brown soil. Now these are the three different kinds of colors of the soil. जैसे red soil, वो देखने से भी आपको पता लगेगा मिट्टी थोड़ी रेड रंग की होगी। जो नॉर्मली हमारे घर में जो गमले होते हैं यानी कि पॉट्स होते हैं, उनमें जो हम सॉइल यूज़ करते हैं, या गार्डन्स होते हैं उनमें जो हम सॉइल यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर ब्राउन सॉइल होती है। जो खेत होते हैं उसमें बहुत बार ब्लैक सॉइल होता है या ब्राउन भी होता है। और ब्लैक बहुत बार ज़्यादातर खेतों में हमको ब्लैक सॉइल बहुत बार देखने को मिलता है। नाउ second is types of the soil on the basis of its component. What different components are present in the soil and the component which is largest in the soil. So that type of the soil it is. If the sand proportion of sand is more in the soil, then it becomes a sandy soil. If the proportion of clay is more in the soil, it becomes clay soil. And if the proportion of silt is more or the organic matter is more, it becomes the alluvial soil. So first we'll study about the sandy soil. The soil having the large amount of sand particles is known as the sandy soil. The particles of such type of soil get separated easily. The soil dries soon after the rain. Now what is the main feature of this soil is that it absorbs a lot of water very quickly. The reason is that because it contains a large amount of sand in it, and as you all know that sand gets dries up very quickly or absorbs the water very quickly. So after rain the sandy soil dries very fast. That means the water that it should hold or a soil should hold, and that is very less. That means water holding capacity of the sandy soil is very less. उसके अंदर से फटाफट जो पानी है वो सैंडी सॉइल के अंदर सैंड के होने की वजह से फटाफट ड्रेन आउट हो जाता है और तुरंत ही सैंडी सॉइल बारिश के बाद सूख जाती है। अगर ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे यहाँ मेला होता है, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ होता है मैदान में, तो हम उसमें ग्राउंड में क्या करते हैं, रेती डालते हैं, तो तुरंत ही वो कैसा हो जाता है, ड्राई अप हो जाता है। मतलब कि जितना पानी है वो मिट्टी में वो सारा जो है सैंड एब्जॉर्ब कर लेती है। सो उसकी वजह से पानी सब सूख जाता है, तो बहुत जल्दी जो सैंडी सॉइल है वो सूख जाता है। नाउ नेक्स्ट इज योर क्लेई सॉइल. द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले पार्टिकल्स इन it is known as the clay soil. During rain, this soil becomes sticky and slippery. In the dry season, the soil becomes very hard and cracks are also seen or develops in that. So clay soil has a large amount of clay, यानी कि चिकनी मिट्टी जो है वो जो soil के अंदर ज़्यादा होते हैं, that is the clay soil. So during the rainy season, when it gets wet, it becomes sticky and slippery also. चिकनी मिट्टी होती है तो क्या होती है, चिकनी होने से स्लीपर हो जाती है, मतलब आप उसमें स्लिप हो सकते हैं अगर आप उस मिट्टी में चलते हैं तो। और सेकेंडली क्या होता है कि बारिश के सीजन में वो बहुत स्टिकी और स्लीपरी हो जाती है। एंड ड्यूरिंग द समर सीजन व्हेन देयर इज नो रेन, अगर उसके ऊपर पानी नहीं पड़ता है बहुत समय तक, देन दैट सॉइल बिकम्स वेरी हार्ड एंड यू कैन सी द क्रैक्स डेवलपिंग ऑन इट। बहुत बार ऐसे आपने टीवी में भी न्यूज़ में भी देखा होगा कि जब बारिश नहीं होती तो बहुत सारे ऐसे हमको जो है फील्ड्स के फोटोज या पिक्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे विदाउट वाटर यू कैन सी द बिग cracks that are developed on the soil. That is just because of there's no water. It becomes too dry in the summer season. If water is not there, it becomes very dry, it becomes very hard, and then cracks develop on that soil. And the third is the alluvial soil, which is best for the farming because it contains large amount of organic matter in it. That is why it is very fertile also. The fertility of alluvial soil is the best.
Alluvial soil, the soil having large amount of organic matter, is known as the alluvial soil. Alluvial soil is very fertile, so it contains large amount of organic matter like the excreta of the animals, dried leaves, etc., that are mixed in the soil. So it is, or the silt is mixed in this, so it is very fertile and best for the growth of the plants. Now read and write. What are the different types of soil? Sandy soil, clay soil, alluvial soil. These. Now, on what type of the soil? Water is not seen after it rains. Water is not seen on the sandy soil. Now, here I have written the different types of soil on the basis of the components, but you can write here also on the basis of the color. जैसे यहाँ पर इसके साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं red soil, black soil and brown soil also. Now, water is not seen on the sandy soil. Which type of soil becomes sticky and slippery after it rains? Clay soil becomes sticky and slippery after it rains. Which type of soil is more fertile? Alluvial soil is more fertile. Now, we move on to page number 77. There is a small activity again here that you have to do, or you have to perform. What do we need? Here 3 transparent bottles, 3 plastic or glass funnels, 3 pieces of cotton cloth and water, sandy soil, clay and loamy soil. मतलब कि 3 different types of soils we need. Alluvial soil यानी कि loamy soil, clay soil और sandy soil चाहिए. थोड़ा सा पानी चाहिए. 3 glass bottles are there. 3 cotton cloths are there and 3 funnels that are required. Now what you have to do is टेक सैम्पल्स ऑफ सैंडी क्ले एंड एल्यूवियल सॉइल. मतलब तीनों सॉइल जो है उसका सैंपल लीजिए और एक एक बॉटल में उसको रखिए और लेबल देम एज सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड एल्यूवियल सॉइल. सबके ऊपर एक एक फनल रखिए एंड फनल के ऊपर जो है एक उसमें आपको take 3 transparent bottles in equal size. The size of the bottle has to be same. Label 1 bottle with sand, other with clay and third with the alluvial soil. Keep 3 funnels in the mouth of the bottle. Keep wet cotton cloth in them. funnels को रखने के बाद bottles के अंदर एक एक, हर bottle के अंदर एक एक funnel रखिए और funnel रखने के ऊपर उनके ऊपर एक पतला सा जो है गीला करा wet cotton cloth, पतला गीला कपड़ा जो है उसके ऊपर fine cotton cloth you have to place it on the funnel. According to the labels on the bottle, put equal quantity of soil in the funnel. अब जो है तीनों के अंदर all the 3 according to the labels. In the first you have to put your sandy soil, in the second you have to put clay soil, and in the third you have to put the alluvial or the loamy soil. Add equal quantity of water in each funnel. अब हमको क्या करना है, उसके बाद तीनों के अंदर जो है इक्वल क्वांटिटी, इसमें जितना पानी डाला द सेम अमाउंट ऑफ वाटर यू हैव टू add in this and the same amount you have to add in this also. In all the 3 you have to add equal amount of water also. Now you have to observe what happens. Tick right against the right options. Now type of soil and observation: sandy soil, clay soil and alluvial or the loamy soil. Now rate of flow of water. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा? सैंडी सॉइल के अंदर होगा, क्योंकि फटाफट जो है पानी एब्जॉर्ब कर लेता है. and level of water in the bottle is more, then amount of the water left in the bottle is medium. मतलब से सबसे ज़्यादा जो फ्लो करेगा पानी वो जो है सैंडी सॉइल के अंदर फ्लो करेगा. उसके बाद लेवल ऑफ वाटर बॉटल में कितना होगा? मीडियम, मतलब आधा जो है पानी जो है भर जाएगा. और सबसे ज़्यादा जो है पानी जो फनल में बचा होगा वो सबसे कम पानी जो है वो सैंडी सॉइल वाली बॉटल के फनल में पानी सबसे कम बचा होगा. नाउ ऑब्जर्वेशन इन द क्ले सॉइल विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज मीडियम, दैट इज नाइदर इट इज टू मच नॉर टू लेस. उसके बाद जो लेवल इन द बॉटल विल ऑल्सो बी मीडियम एंड द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट विल ऑल्सो बी मीडियम इन दिस. इन ऑल दिस 3 क्ले सॉइल मतलब पानी एब्जॉर्ब भी करेगा, धीमे धीमे पानी भी बॉटल में भी आएगा और जो है फनल में भी थोड़ा ही पानी रहेगा. लेकिन एल्यूवियल सॉइल के अंदर क्या होगा? द rate of flow of water will be slow, then amount of water in the bottle will be low also, and what is there will be more amount of water will be left in the funnel. क्योंकि जब पानी धीमे धीमे से बॉटल के अंदर उतरेगा तो फनल में पानी ज़्यादा रहेगा. तो एल्यूवियल सॉइल में सबसे ज़्यादा पानी जो है फनल के अंदर पानी उसमें रहेगा.
That means it can retain water for a longer period of time compared to the sandy soil and clay soil. Sandy और clay soil के comparison में alluvial soil के अंदर जो है पानी ज़्यादा देर तक रहता है, और सबसे कम टाइम के लिए जो पानी होल्ड कर सकता है दैट इज़ द सैंडी सॉइल. बहुत ही कम टाइम के लिए जो है पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं सैंड के वो काफ़ी बड़े होते हैं, इसकी वजह से वो ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाता है. Last page, that is the 79 page of this, page number 79 of this lesson. Read, this is very important part of the soil that we all have to remember. The capacity of the soil to hold water for a longer period of time is known as the water holding capacity of the soil. That means the soil which can hold water for a very long time. So how long it can hold the water, that time is called as the water holding capacity of the soil. The capacity of the soil to drain out water is known as the water draining capacity of the soil. As water holding capacity is there, same with the water draining capacity. मतलब कितनी जल्दी पानी उसमें से drain out या निकल जाता है या सूख जाता है soil में से, that is called as the water draining capacity of the soil. Different soils have different water holding and water draining capacities. All the three different types of soils on both the bases have their own different capacities to hold the water as well as to drain the water. So now here you can see a 1, 2 and 3 is this pictures are given here. This diagram is given here. So based on the amount of components shown here, mention type of soil and tick the correct option for those given in the diagram. Now in this diagram you can see in the first diagram, sand is there which has the largest part of the soil. Then it is the stones, clay, silt, then organic matter is there. Then it is dust is there and some minerals are there, but the major part of this in the soil is there. You can see nearly half, that means nearly 46% of the soil contains sand. So this type of soil is your sandy soil. So you have to tick it in the sandy soil and you have to color this with different colors. ये जितना भी ये तीनों diagrams दिए हुए हैं उनको आपको अलग अलग कलर से आपको कलर भी करना है. Now next is in this you can say the silt is there, more silt is there, then you can see stones are there, moisture is there. Moisture means the water content that is present in the soil. So moisture is there. उसके बाद इसमें जो है क्ले दिया हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसके बाद एयर है और सैंड है. सो मोर ऑफ द सिल्ट इज देयर, दैट मीन्स इट कंटेन्स मोर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज़ योर एल्यूवियल सॉइल. इसके अंदर सबसे ज़्यादा सिल्ट होता है और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, बाकी सारी चीज़ें कम होती हैं. और मॉइस्चर भी देखिए काफ़ी अच्छे उसमें है. कंपेयर यू कैन कंपेयर दिस मॉइस्चर इज गिवन हियर इन द सैंडी सॉइल, हाउ मच पोर्शन ऑफ द मॉइस्चर इज देयर एंड एयर इज देयर कंपेयर टू हियर. यू कैन से दैट इट हैज़ larger amount of moisture share, मतलब कि इसके अंदर पानी ज़्यादा देर तक रुक सकता है. Third is you can say the majority share is of clay, then you have the moisture, sand, silt, organic matter, air and stones. तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्ले है, उसके बाद सैंड, सिल्ट है और फिर सैंड है और मॉइस्चर है, ऑर्गेनिक मैटर है और स्टोन्स है. इसका मतलब जो है ये सॉइल कैसा है, द टाइप ऑफ सॉइल इज़ द क्लेई सॉइल. सो डियर चिल्ड्रन यू ऑल हैव टू आप कलर फिक्स कर लीजिए. जैसे मॉइस्चर है उसके लिए ब्लू कलर करना है, सैंड के लिए लाइट येलो कलर करना है, सिल्ट के लिए डार्क येलो करना है, ऑर्गेनिक में आप ग्रीन कर सकते हैं, एयर में आप ग्रे कर सकते हैं और स्टोन्स में आप कोई भी ब्लैक या ब्लू कुछ भी कर सकते हैं. तो इस तरीके से जो कलर फिक्स करेंगे तो सेम वे आप वैसा ही कलर जो है सबके अंदर आप करेंगे. तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू नो दैट आई हैव डन क्ले रेड कलर. तो ये जो है सारी जगह अगर आप रेड करेंगे तो पता लग जाएगा कि दिस पोर्शन इज क्ले इन ऑल द 3 diagrams. So this way you can select and do the color. So you have to do this and you have to draw this in your notebook also one time. Now there, think and say, a few questions are left here. Think and say, why does the water drain fast in the sandy soil? Because there's lot of sand in it and the particles are they are not closely packed with each other of the soil, so the water drains out easily in this. Why does the water drain slowly in the clay soil? Because it is sticky. Why is more water stored in the alluvial soil? Because the particles of the soil are very close to each other, so the water drains extremely slowly.
जो सैंड होता है सबसे ज़्यादा उसके अंदर जो बड़े पार्टिकल्स होने की वजह से जो सैंड होता है थोड़ा सा पार्टिकल्स उसके बड़े होते हैं साइज में कंपेयर्ड टू द एल्यूबल सॉइल बिकॉज इट इज़ अ फाइन पाउडर ऑफ द सॉइल. So the particles are very closely packed and there's less space, so it takes a lot of time for the water to get in and drain it, and that is why it can hold the moisture for a longer period of time. अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे एयर गैप्स ज़्यादा मिलेंगे तो जल्दी ड्रेन आउट हो जाएगा उसमें से. तो और पार्टिकल्स बाइंड ही नहीं होंगे इसलिए पानी इजीली जो ड्रेन हो सकता है उसके अंदर. सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेसन नंबर 9 which was your land. I hope you all have understood this, and if you wish you can do these small experiments with the plastic bag. You can keep a wet lump of soil in the plastic bag. एक आध 2 घंटे आप रखिए धूप में, आपको दिखाई देगा कि वो उसमें से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपको जो है मॉइस्चर के दिख रहे हैं. तो आप छोटे ऐसे एक्सपेरिमेंट आप ट्राई भी कर सकते हैं. सो डियर चिल्ड्रन, नाउ विल स्टार्ट आवर वर्क इन द workbook. So complete everything in the textbook that I have written here, so that you can complete it in the textbook also, and then do it in your workbook. And everything from the workbook you have to write it in your notebook also one time. So we come to the end of lesson number 9, that is land in the textbook. Explanation part is over. Now is your writing part. Bye dear children.